NCERT syllabus for Class 4th English Marigold Chapter 4 The Little Fire Tree. Shetty the magician returning home when all of the sudden it began to rain. It rained heavily. Shetty looked around the shelter and saw a pretty little fire tree. He ran towards it as fast as he could. Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet. Here the magician, whose name is Shetty, was going back to his home one day and it started raining heavily, so he saw a pretty tree and ran quickly save himself for rain. When the rain stopped, Shetty found that he was not wet but completely dry because of the fire tree. Thank you. Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. Here, the magician thanked the tree and decides to reward it by grant it with 4 wishes. सो जो मैजिशियन था वो बहुत हैप्पी हुआ और उसने देखा जब उसने उसको पेड़ को जो था ट्री को उसने थैंक्स बोला और उसने बोला कि तुमने मुझे मतलब मेरे साथ अच्छा बिहेव किया, मतलब मुझे मेरे लिए तुम काइंड हो, अच्छे हो, तो जो है मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ और जो है कि अब तुम मुझसे 4 विशेस मांग लो और मैं वो तुम्हारी विशेस पूरी कर दूंगा. The said fire tree had leaves like needle, and no birds ever had their nest on it. So it said, "I wish I had green leaves like my other friends." Next morning, its wish was granted. So a goat came along and ate all the green leaves. "Oh dear," said the fire tree, "I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves." As you can see in the picture, the expression of the trees face is sad because it had needle-shaped leaves and birds did not make their nest on it, so the tree wishes for green leaves. The next morning, the leaves turned green and a goat came there to eat all fresh green leaves. Now the tree was worried and wished for gold leaves so that goat did not eat them. तो क्या होता है कि आप देख रहे हो कि पिक्चर में कि ये जो ट्री है वो कितना उदास हो गया ना, क्योंकि उसकी एक विश पूरी हो गई कि जो है नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उसने देखा तो उसकी जो निडल शेप वाली जो लीव्स थी उसकी जगह अच्छी हरी भरी बिल्कुल पत्तियां आ गई थी. बट उसने वो सैड था क्योंकि उसने देखा कि अरे वहां एक गोट आ गई है और उसके पत्तों को उसने खाना शुरू कर दिया है. तो उसने सोचा कि उसने फिर एक नई विश की और उसने सोचा कि मैं अपनी लीव्स जो हूँ गोल्ड की करा लेता हूँ. तो जो गोल्ड की लीव्स होंगी तो वो तो कोई खाएगा नहीं. When the little fire tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. "How happy I am," it said. A man came along and stole the gold leaves. So the children, what happened the next morning? The next morning tree had gold leaves and it was so delighted to see the gold leaves. Now a thief came and stole all the gold leaves from the tree. तो क्या होता है अगले दिन बच्चों कि अगले दिन जो होता है वो उसकी जो गोल्ड की लीव्स होती हैं
वो उसने जो विश की होती है वो उसकी वो विश पूरी हो जाती है कि उसको गोल्ड की लीव्स चाहिए होती है, उसके गोल्ड की लीव्स हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि एक चोर आता है, एक थीफ आता है और वो उसकी सारी गोल्ड लीव्स चुरा के ले जाता है। I wished I had glass leaves instead. Men do not steal glass leaves. The next day, it glass leaves shone in the bright sun. How happy I am! It said. At night, the wind blew. Woo woo woo! All the glass leaf broke. So the children, now the fool tree wished that he had glass leaves, because people do not steal glass leaves, which means the glass leaves were shining. They were shining very brightly and sunlight fell on them. Now the tree was again very happy. So what happened when the wind blowing? The glass leaves broken. तो बच्चों क्या हुआ नेक्स्ट डे कि उसने जो विश की थी, उसने विश किया था कि उसकी जो लीव्स हैं, गोल्ड लीव्स हैं, वो ग्लास लीव्स में हो जाएं, ताकि जो ग्लास की लीव्स मतलब शीशे की लीव्स, ताकि जो है कोई भी आदमी उसको चुरा ना पाए, है ना। और जो जब देखा उसने कि वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो सन की जो ब्राइटनेस थी, जो रोशनी थी, वो उन ग्लास लीव्स पे पड़ रही थी, तो वो बहुत चमक रहा था, है ना। तो बहुत हैप्पी हो गया था। बट रात में क्या हुआ कि बहुत तेज हवा आई और उसकी जितनी भी ग्लास लीव्स थी वो सब टूट गई। Oh dear, said the fire tree, I like my old needle like shape best, like leaves best for ghosts, best for goats. Do not eat them. No man can steal them. The wind will do them no harm. The tree want to sleep. When it wake up in the morning, it had all its needles back again. Oh, I never was. Oh, I never was so happy, said the little fire tree. Now, the tree is worried about the broken leaves after using it 3 wishes. It missed the needle-shaped leaves because not goat would eat them, man would not steal them, and they don't be warmed by the wind also. So the next morning, when the tree woke up, it noticed that the needle-shaped leaves were back again, and the tree got very happy. So क्या हुआ कि उसको तो पता चल गया था, उसने 3 विशेष तो कर चुका था, वो ट्री जो था उसने एक क्या किया था, उसने अपनी ग्रीन लीव्स कराई जिनको गोट ने खाया, फिर उसने गोल्ड लीव्स कराई जो ह्यूमन बीइंग्स ने, जो पीपल्स ने उसको चुरा लिया, फिर उसने ग्लास की लीव्स बनवाई जो कि हवा से टूट गई। तो उसने विश किया, तो सोचा कि मेरी पुरानी वाली ही लीव्स अच्छी थी, जो मेरी पुरानी लीव्स थी वो ही अच्छी थी और मुझे मेरी वही वाली लीव्स वापस मिल जाएं। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जब वो उठा, नेक्स्ट डे उसने नोटिस किया कि उसकी जो निडल शेप वाली जो लीव्स थी वो ही वापस आ गई थी और वो बहुत हैप्पी हो गया था। सो चिल्ड्रन, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी? We learn that we should always appreciate the things or qualities we have instead of being greeted or all the other things. तो हमने इस पोएम से, हम स्टोरी से क्या सीखा कि हमें जो है अपनी हर चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनके ऊपर जो है मतलब हमें उन चीजों को मान लेना चाहिए, क्योंकि और दूसरों की चीजों से हमें जेलस नहीं करना चाहिए। जो हमें मिलता है वो बेस्ट होता है। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स। वर्ड मीनिंग: सडन, अनएक्सपेक्टेड, शेल्टर, रिफ्यूज, ग्रांट,
agree to give something to someone. Pretty, lovely, reward, prize. Make sentences. Sudden. All of a sudden a thief snatched my purse and ran away. Shelter. I gave shelter to the wandered bird. Grant. The magician granted 4 wishes to the fire tree. Pretty. She is looking pretty. Reward. I will give you a reward for your good deeds. Answer the following question. Who was Shetty? Shetty was a magician. Shetty कौन था? Magician था, एक जादूगर था. Why was the Shetty happy? Shetty happy क्यों हुआ? Shetty was happy because he did not get wet in the rain. Shetty इसलिए happy हुआ क्योंकि वो बारिश में भीगा नहीं. How many wishes will Shetty like to give to the tree? शेट्टी ने ट्री को कितनी विशेष मांगने के लिए बोला था? शेट्टी विल लाइक टू गिव 4 विशेस टू द ट्री. उसने 4 विशेस के लिए बोला था. हु गिव शेल्टर टू शेट्टी? शेल्टर मतलब शेट्टी को किसने शेल्टर दिया था? द लिटिल फायर ट्री गिव शेल्टर टू द शेट्टी.